Speaker, sir, on behalf of the government, I'm not here to, reply what has been initiated during the short duration discussion by my member, Sri Tawang Wakhamji, but I am here to support the voice raised by member of the August House and people of Arunachal Pradesh and the people of Northeast against the racial discrimination which is being faced by our people residing in different parts of the country. And I would like to tell you that it's not just an isolated case which occurred in Delhi on 20th of February. This has been there for quite some time. Many a times, a lot of this kind of situation took place, complaint has been lodged, some amount of action has been initiated, but it has never seen to an end to this kind of racial discrimination which is happening, against the people from the Northeastern because of their looks. So, when we are talking about the kind of discrimination we face time and again by our own brothers and sisters in the metro cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, or maybe other smaller cities. Time and again, a lot of voice has been raised, but if you remember, one of the members also mentioned about that incident. One of our own son, who was son of our former legislator, late Nilu Tania, he was beaten to death. After that, some kind of initiative was taken, and a committee was formed under one IS officer. That committee was named Bejwaro Committee. The committee has been formed and a lot of recommendation has been given by the Bejwaro Committee, but what I feel is just not about the penalizing a person who kind of commits such kind of crime. But what I feel is the mindset. जो मानसिकता है उसमें बहुत problem है. We need to change the mindset of the people. When we all say that we commonly term them as the mainland Indians. I, as a student, also I studied in Delhi University, and I did my graduation, my law, and my postgraduate management courses there. So we have seen often our brothers and sisters, they face this kind of problem. But out of many incidents, very few are reported. And that too we see that not much action is initiated against those complaints and the FIRs. And not many doesn't get registered due to embarrassment or fear that if I maybe file a FIR, then maybe I'll get kind of again beaten up, or maybe again be subjected to some kind of torture by the locals there, because we come from outside. So we face this kind of issues many a times. So I'd like to tell you that when this incident occurred on 20th of February, so I had a word with Honorable Chief Minister. Then Honorable Chief Minister has told me that he has already spoken to the Commissioner of Police, Delhi, to initiate immediate action, and see to it that proper action is taken against the erring people, those who have committed this crime. And we all know about this incident through the social media, through the mainstream media, and we have seen the videos circulating, going viral on the internet. So the kind of language used by a woman against a woman, that too is like something which we can't even imagine in our wild dreams. Outraging the modesty of a woman by a woman. And when Honorable Chief Minister spoke to me about the updates on this incident, then I called up the DCP of that area, and I told him about this incident. They said that the matter is being examined. We are going to
initiate action against those couple which surfaced on the internet. And I talked to the SHO by myself of the Malviya Nagar. Then he told me that certain sections have been, invoked in the FIR. Then I asked them why not the section, the Act of SC/ST Atrocity Prohibition Act is not imposed on them. Why it has not been invoked? Then they were saying कि जो जिसके against में complaint or one of them is a SC. Then later we found out that he was not an SC, so that SC/ST Prohibition Act has been also been invoked in that. So I have a small detail about the fact of the case. Are just for the benefit of the House, I would like to read it out. So based on the written complaint submitted by the complainant, the FIR number 68/26 dated 21/2/26 was registered at the police station Malviya Nagar, Delhi under section 79, 351(2), 196 and 35(5) of the BNS. And during the investigation, the investigating officer SI Parveen Kumar moved an application to the concerned DCP seeking approval for inclusion of provision of SC/ST Prevention of Atrocity Act. And subsequently, under section 3(1)(R), 3(1)(U), and 3(1)(W) of the SC/ST Prevention of Atrocity Act were added to the FIR, and the investigation was entrusted to the ACP. So the ACP, by name Mr. Rituraj, is looking after the entire investigation. So here I would like to tell you that the concern which has been raised by honorable members and the people, what we see, when I talk about the mindset of the mainlanders, we need to understand why it's happening. Sometimes we feel that it's out of ignorance. Sometimes we feel like one of the members, Sri Toko Tatung, has said that the curriculum should be in the NCERT and other textbook which are being taught to our students. So in the Bejbora committee also it has been recommended that the curriculum of a contribution of Northeast India should be in the NCERT textbook, to at least to let people know about the Northeastern people and about the culture, about the looks, and how they are contributing to the nation. And there was another suggestion made by the Bejbora committees, like cultural exchange program. So when we talk about this curriculum, nothing much has happened till now. We don't see that any of the textbook. And if we talk about NCERT only, it's not going to help, because there are a lot of other state boards. We have to tell the government of India to tell the state boards also to include a curriculum of Northeastern India in the school textbook. And second, cultural exchange programs are happening, but not up to that extent that it can create awareness among the rest of the country about the people and the culture of the Northeast. So these are the things which we need to take it up on a very war footing, requesting government of India. And we always take pride that diversity is our strength, is the beauty of the country. But at times this diversity becomes a big menace for the people from the Northeast India. When I traveled to Delhi, this time I was traveling to Rajasthan with my family on a vacation. So I met a couple of people on the way when we stopped over for a cup of coffee there. So they asked me, "Aap log kahan se ho?" Then I said, "Hum log Arunachal se." "Acha, Andhra se." So this is the kind of general knowledge they possess about our region. But हाइस तो तब हो गया, मैं उनको पूछा आप लोग कहाँ से हो, तो हम लोग यहाँ राजस्थान से ही हैं. तो देन ही आस्क्ड मी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोला मैं जैसलमेर जा रहा हूँ. ओ अच्छा, वो तो उधर पड़ता है ना, गुजरात में. तो ही बीइंग फ्रॉम राजस्थान डजंट नो अबाउट जैसलमेर. तो ये भी एक विडंबना है. तो हाउ डू वी ब्लेम कि इनको कोई हमारे बारे नॉलेज नहीं है कभी कभी.
तो द फंडामेंटल इशू इज कि इनको कैसे शिक्षित किया जाए. एंड आवर फ्रेंड ऑनरेबल मेंबर तोको तातुंग हैज सेड कि नॉर्थ ईस्ट लोगों के बारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा नॉर्थ दिल्ली में लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स residing there as a PG, as a tenant, and the hostels, and a lot of hostels for the northeastern student has been made there. So they keep seeing each other there. And the problem is with the southern part of Delhi. But what I feel, the southern part of Delhi is a elite, people, they live there, those who are like well educated. So if we think ki education is again the main issue, why we are facing this kind of problem, then why we should be facing this kind of problem in the southern part of Delhi? The Malviya Nagar falls under South Delhi. So we need to ponder, we need to understand where the exact problem lies. And just mere awareness is not enough, to curtail this kind of menace, because we have seen people knowing each other for quite some time, studying together. They also tend to, get into this kind of, problem. आप एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ 3-4 साल से एक ही कॉलेज में है, एक ही हॉस्टल में बैठ रहा, but when again they come to some kind of altercation, then they again use the same kind of racial slurs and racial abuse. तो इसके लिए मैं तो जैसे सोचता हूँ अभी कि भेजबोरा कमेटी के तरफ से जो एक पिनल एक्शन के लिए जो एक अमेंडमेंट मांगा है, वो भी अभी तक हुआ नहीं है. तो आज मैं इस सदन के जरिए ज़्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, बिकॉज ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स who have participated, who has initiated, Mr. Thanwang Luang जी, और उसके बाद हमारा सीनियर मेंबर निनोंग इरिंग जी और तोको तातुंग जी और लासम सिमाई और वांगलिन लुआंगडोंग ने पूरा विस्तार में बताया द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो हो रहा है अक्रॉस द कंट्री. हमारे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे तो आप लोगों ने पूरा बताया. तो अभी डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव अ नॉर्थ ईस्ट सेल है हमारा दिल्ली में, वहाँ पे जो भी नॉर्थ ईस्ट पीपल का जितना भी प्रॉब्लम, जैसे अभी रोबिन हिबू जी का भी नाम यहाँ पे लिया है, दुनिया ह्यूमन सर्विस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हु आर सफरिंग दिस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद भी अभी भी यही प्रॉब्लम चल रहा है. तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही जैसे हमारा जिसने इनिशिएट किया थामा वांग ने बोला कि एक एक्ट बनाना चाहिए, तो ये एक रिकमेंडेशन भी हम लोग यहाँ से भेजना चाहिए कि अगेंस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा पीपल रिसाइडिंग इन मेट्रोस, उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए. जब तक एक बहुत ही एक स्ट्रिंजेंट एक्ट होगा जहाँ में वो पिनलाइज नहीं होता है, तब तक ऐसा चलता रहेगा. तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम तो चलता रहेगा. एक डर जब तक नहीं होगा कि व्हेन आई कमिट दिस काइंड ऑफ क्राइम दैट आई कांट गेट अवे, ये जब एक बैक ऑफ माइंड में जब तक डर नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. अभी जैसे मैंने बोला कि इग्नोरेंस की वजह से या थोड़ा एजुकेशन का कमी या जनरल नॉलेज का कमी इज नॉट ओनली द रीजन, देयर आर मेनी रीजन अटैच्ड टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज बीइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. तो मैं तो यही कहूँगा कि एक स्ट्रिंजेंट एक्ट बनना चाहिए, जैसे भेजबोरा कमेटी में रिकमेंडेशन किया है, तो उसको लेके. और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल who has raised their concern as they have gone to the mainstream media condemning this racial discrimination which had happened in Delhi. तो हमारा जो 3 बच्चियां हैं नॉर्थ ईस्ट का, उसमें से 2 हमारा अरुणाचल का है, एक मणिपुर का है. तो उनके साथ जो हुआ ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए. तो इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वी कंडेम दिस इंसिडेंट. और मैं तो यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, बिकॉज हियर वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन. सिर्फ आपको ये मैं अपने तरफ से, जैसे सरकार की तरफ से मैं आपको ऑनरेबल स्पीकर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक यहाँ से मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि दिस ऑगस्ट हाउस का जो कंसर्न है अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस काइंड ऑफ एक्ट विच हैज़ बीन meted out to our people from north eastern state is not acceptable and is a very disgusting act. और फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ हमारे तरफ से जो भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसा एक ठोस कदम उठाया जाए ताकि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को इस तरीका का बार बार बेइज्जती, इसके बाद मतलब एम्बैरेसमेंट सहना ना पड़े. क्योंकि वी ऑलवेज टॉक अबाउट वन नेशन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत. अगर जब तक ऐसा चलता रहेगा तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का कैसे सपना देख सकते हैं, एक विकसित भारत का सपना कैसे देख सकते हैं.
आप जब घर के अंदर दो भाई का लड़ाई होगा तो घर का जो फैमिली को आगे बढ़ता हुआ कैसे देख सकता है? वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी नीड टू लिव इन हार्मनी। एक दूसरा का दुख दर्द समझ के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज 21वीं सदी में अगर इस तरीका का अगर अभी भी चलता रहता है तो बहुत दुखद है ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एमपी का हमारा फोरम भी है, दे ऑल शुड कम टुगेदर। यहाँ पे कम से कम प्रेस करना चाहिए कि एक्ट लाया जाए, है ना, जिसमें इस तरीका का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको एक वंस एंड फॉर ऑल किस तरीका से एक सॉल्यूशन दिया जाए, उस पर काम किया जाए। तो मैं सरकार की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप एक मैसेज कन्वे कर दिया जाए, ताकि इस तरीका का जो हमारा बच्चों को ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है, फिजिकल असॉल्ट फेस करना पड़ता है, और जो मेंटल टॉर्चर के थ्रू गुजरना पड़ता है, जो मैं तो कभी कभी ये बोलता हूँ कि जो फिजिकल पेन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द मेंटल पेन। जो आपको मानसिक रूप से जो आपको तकलीफ मिलता है, वो जो शारीरिक रूप का तकलीफ से तो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, एंड इट हैज़ गॉट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ। तो इस तरीका का ना हो, इसके लिए मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सदन की तरफ से ये आप एक कन्वे कर दें हमारा दुख और हमारा जो डिस्कसनेस, यानी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन भारत सरकार को आपके तरफ से कन्वे कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।